Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now we are continuing our discussion of the question paper of quantitative methods for MEC Economics IGNOU, and this is paper of 2023. We are done with section A. From today we are starting section B. So it is starting from question number 5. It says that a production function is given by Q is equal to half L square K square. Q is level of output, L is labor input employed, K is capital input employed. Find the marginal productivity of labor and capital. इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है, इससे बेसिक आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता. Q है यहाँ पे हाफ L स्क्वायर K स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 5 वी आर सॉल्विंग. Q is half L square K square. So what is marginal productivity of labor? We call it MPL, and it is the partial derivative of output with respect to labor. L capital है तो मैं L capital ले लेता हूँ यहाँ पर. So this is half L square का क्या होगा डेरिवेटिव? 2L into K square. 2 से 2 cancel. So MPL is L times K square. This is the marginal productivity of labor. And what is marginal productivity of capital? Marginal productivity of capital, MPK. This is the partial derivative of output with respect to capital. Half L square as it is, K square का होगा derivative 2K. So again MPK is half से 2 cancel, L square into K. So this is the marginal productivity of capital. एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब इससे ज़्यादा बेसिक तो वो कुछ पूछ ही नहीं सकता था आपसे. तो छोटी सी बात पूछी थी कि आप बताइए व्हाट इज़ MPL एंड व्हाट इज़ MPK, दोनों मैंने निकाल दिए. 12 मार्क्स का क्वेश्चन है. अब कैसे 12 मार्क्स जस्टिफाइड होंगे पता नहीं, लेकिन इतना ही क्वेश्चन आया तो पूछा कुछ और है नहीं. ठीक है, राइट, ओके, थैंक यू.